One thing is Sapna, I have to check कल Saturday है, so I will get time, so I'll check tomorrow and I think by tomorrow only I'll share it with you. ठीक है, आपके ही मेल आईडी पे. All right. Apart from that, there is Ishan, Dhruv, Suraj, Sapna, and one more. I think other people will join here. Right. So previously, what we have done Mekinder, we have done central place to we have not done central place. So we have done Mekinder, Rostov, okay, Rostov, and then apart from that, what we have done, Rostov कर लिया, Mekinder कर लिया, Spikeman कर लिया, और आपका the other theories also that we have done. What is the name of the theory? No. Spikeman, Mekinder. नहीं, उससे पहले भी तो किया है ना हम लोगों ने. हाँ, वेबर्स किया है, उससे पहले एक और किया है. ठीक है, ऑप्टिमम. ठीक है, सो आज हमें क्या करना है, वी विल डू 2 मोर एंड देन वी विल फिनिश द कोर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट थ्योरी. ठीक है, हमारा पूरा मॉडल्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी आर गुड टू गो. सो नाउ एक एक थ्योरी हमने क्लास के अंदर किया है, राइट. So today first I'll talk about the growth pole and growth centers. You need to understand about growth pole and growth centers in order to understand the theory which has been given by Peroxy and Vaudeville and what they have told and what they have said in a different way. दोनों ने अलग अलग तरह की बातें करी हैं. ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की बात करिए, पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू एनालाइज कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, राइट. सो एंड व्हाई दे हैव टॉक्ड अबाउट ग्रोथ पोल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आल्सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मॉडल्स को कैसे पढ़ा जाता है. प्रीवियस टाइम ईशान हैज जॉइंड, राइट. ईशान, previous time you were very worried that ma'am this is very difficult etc. See, there are certain topics in geography that you have to do as it is. उनको आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो थ्योरीज किसने दी है, दैट हैज बीन गिवन बाय सम ऑफ द स्कॉलर्स एंड दे हैव प्रेजेंटेड इन अ वे कि हमें उसको उसी तरह से करनी पड़ेगी विदाउट एनी फेल. ऑल्दो हो सकता है कि हमें ये मॉडल्स ऐसे लगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस मॉडल्स राइट नाउ. कम राहुल. सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस मॉडल, लेकिन वो रेलेवेंस कहीं ना कहीं बनता है तभी हम वो थ्योरीज क्या आई हैं दैट हैव कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन. मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको बताऊंगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने मैकाइंडर का एग्जांपल आपको दिया था, आई हैव गिवन द मैकाइंडर एग्जांपल कि क्यों रशिया जिसको बोला गया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हु रूल्स द सेंट्रल हार्टलैंड, ही वन हु governs the heartland, governs the whole island, and one who governs the whole island governs the world. This is what we have talked. और हमने ये देखा भी. ठीक है, प्रीवियस हम अगर देखेंगे हिस्ट्री उठा के तो यू विल सी रशिया वाज वंस वन ऑफ द सुपर पावर as compared to USA. They were also having the same hegemony, right, with their ideology, with their technology, with their kind of a dominance that he had, right. उसके बाद वो ओवर एक्सटेंशन की वजह से कोलैप्स हो गए, वो बात अलग है. But once they try to dominate the whole, and now also Russia is one of the country which is coming back and they are trying to annex the different territories of their area. So हर किसी का एक इम्प्लीमेंटेशन है, आपको ये चीजें इसी तरह से लर्न करनी है. ठीक है, और इनका एक लिमिट है कि आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है कि ग्रोथ पोल क्यों आया, उन्होंने ग्रोथ पोल क्यों दिया. जितना मैं क्लास में आपको बताऊं सिर्फ उतना ही काफी है बिकॉज ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है. इसमें ना तो कोई करंट अफेयर ज्यादा है. हाँ, हम लिंक कर सकते हैं करंट अफेयर से, हम मैच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंट्री की सिटी के बारे में पढ़ रहे हो, हम उसकी हिस्ट्री में जाएं तो डेफिनेटली हमें समझ आ सकता है, लेकिन ज्यादा स्कोप है नहीं. ठीक है, सो coming back to the topic, and we will study the growth pole and growth center theory of Perox and Vaudeville. Write down first understand what is growth pole and growth center theory. Heading डालिए growth pole and growth center theory. Write down the heading growth pole and growth center theory. Write down the heading.
देखिए, व्हाट इज अ ग्रोथ पोल? एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, दिस इज अ प्लेस, राइट, दिस इज अ सेंटर जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, राइट, एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब यहाँ पे हो रही है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर एवरीवन. People will try to come to this point from all the sides, right, irrespective of anything. They will try to come and gain what? Access to this place, either for the opportunities or for any kind of accessibility or for their goods and services. They will try to come to this area. ठीक है, किसी भी तरह से they want to come to this area. तो यहाँ पे definitely the movement of the people will also begin. So movement of the people will also be huge here. Just hold on, it's important. Okay. Uh, all right. So, where were we? Huh? Growth poles. ठीक है. तो ज़्यादा people will come here. So first write down economic development. Economic development is the highest coveted. Please growth pole, growth centers को बहुत ध्यान से पढ़ना because PYQ में question आया हुआ है that they have asked only about what is growth pole and growth centers. So आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं. ठीक है? Write down economic development. Economic development is the highest coveted. Is the highest coveted goal for an economy, for an economy and nation, for an economy and nation. ठीक है. Next, second point, various policy frameworks, comma, economic plans and strategies are formulated by the respective government to resurrect मतलब सही करना, resurrect
RESU. RESURRECT. Resurrect. Resurrect the economy. The economic stagnancy. Stagnant मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाती है, राइट? स्टेगनेंट से मतलब ये है that it's not growing, right? Or maybe the people, maybe it's growing but people are not getting so much of benefit out of it. So that is also one of the trait. Write down next point. The theory of growth pole and growth centers. The theory of growth pole and growth centers. And next test I am going to give you this question, growth pole, growth centers. So make sure you do it well. The theory of growth pole and growth centers have been proposed by French economist with a view to resurrect with a view to resurrect French economy with propulsive growth with propulsive growth in a short span of time. With propulsive growth in a short span of time. Right? Next point. Can you tell me one example of the growth pole? Can I say Mumbai in India is a type of a growth pole? Yes. Why? Can I say Mumbai is a type of a growth pole? Why Mumbai is a type of a growth pole? If I say talk about the regional places in India, because of the opportunities, right, and the kind of atmosphere, the kind of a regulation they have created. This opportunities nahi, the kind of the regulations that they've created for the local businessman, right? Infrastructure, networks, your seamless commutation, ये सब कुछ आपका किस में आएगा? Will come in the why that thing become, why that particular place become a growth pole. अब growth pole का वजह क्या होता है बनने का? Because it is getting attractive because of its policies. बहुत ज्यादा policies आप इस तरह से बनाते हैं कि people will try to come to this area. For example, recently I have heard a news that they are planning to open the whole city for 24/7. That means the kind of economic growth, any franchisee, any company, for example, if I am owning one restaurant and if I want to open a chain of it, so I would think only the first place would come to me is Mumbai. Why? Because I know now the regulation of that place has allowed to open the restaurant for 24/7, or any chair or any cafe for 24/7. Even the malls can be open 24/7 now without any problem. So you don't have any restriction. That means the footfall is going to be for 24/7, and the kind of a the kind of a profits that I am going to make, it's going to be huge. It's going to be exponential. Versus अगर कोई ऐसी city है जहाँ पे बहुत ज्यादा regulation है, जहाँ पे बहुत ज्यादा there is restriction which is being imposed, right? So definitely I'll not go to that place. So this is becoming more and more attractive for me, right? So I'll probably go to Mumbai and try to open my chain there, right? So this is what they're talking about, right? So this is the first point. आप इस तरह से connect कर सकते हैं. You can give the example of Mumbai. Please write down example of Mumbai in the regional places, and also write down the new regulation policy where it can open for 24/7. आपको इस तरह से करंट अफेयर्स को कनेक्ट करना है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा कोई हाईवे आपका खुल गया या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बुलेट ट्रेन हैज बीन ओपन नाउ, so in between the two places, so obviously that will become even more attractive because your transportation will become very seamless for you,
या फिर फ्रेट चार्जेस उन्होंने कम कर दी. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउ द ट्रांसपोर्टेशन दैट यू आर डूइंग that is going to be very very less. You don't have to pay so much. The moment they say so, it becomes even more attractive, because the one who is thinking from the business point of view, they want the cost of production should be as low as possible, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए जा सके. सो दिस होल एरिया विल बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ये ग्रो करता जाएगा. ठीक है. और फिर आप बोलोगे कि वाई वी आर बिहाइंड, दैट इज बिकॉज उन्होंने पॉलिसीज ऐसी ली, because they knew that what is the demand, what is the need of the time, and they did that very very quickly. लेकिन हाँ, इसके लिए आपको ज्यादा you need lot of regulation के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. So this cannot be implemented अगर आपने सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट नहीं करा, because now the chances of people getting maybe they can be like it can happen that कि infrastructure अगर अच्छा हो भी रहा है, लेकिन अगर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, there will be a problem with that. ठीक है, right? Done. This is going to be the case. अब आप मुझे ये बताइए that you can write the examples से जितना connect करेंगे उतना समझ में आएगा, right? Now next write down, it was proposed by Francois Perroux. स्पेलिंग लिखेंगे FERANCISPORROUX. Francois Perroux. Francois Perroux. I'll write down the spelling again. Francois Perroux in 1955 as a part of in 1955 as a part of economic planning. In 1955 as a part of economic planning in France. As a part of economic planning in France, comma, he was concerned with the phenomena of economic development. He was concerned with the phenomena of economic development and with the process of and with the process of structural change. Right? So he was the one who has given the concept of growth pole. Right? Growth pole concept was given by Francois Perroux, but the concept of the other one, which is known as a growth center, was given by Bodyville. तभी हम साथ में पढ़ते हैं Perroux and Bodyville concept. ठीक है. Second लिखेंगे the concept of growth center. Write down, online students. The concept of growth centers has been given by or proposed by Bodyville as a part of his studies. Next sub point लिखेंगे, he gave a regional character
he gave a regional character and specific geographic content and specific geographic content. He gave a regional character and a specific geographic content to Perrock's conception. To Perrock's conception. Okay. Next, we will try to explain growth pole theory first and growth center first, and then we will come to what is the theory. ठीक है? पहले लिखेंगे growth pole theory के बारे में. No, they are different. अलग अलग. That is what I have said. Growth pole and growth centers are different. One has been given by Vaudeville, other has been given by Perrock's. Now, what is the difference between both of them? We are going to do now. ठीक है? तब हेडिंग डालेंगे अलग से growth pole theory. ग्रोथ पोल थ्योरी और क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर. स्टार मार्क कर लीजिए. ग्रोथ पोल थ्योरी. Write down. Perrock's attempted to explain the modern process of economic growth. He wanted to explain modern process of economic growth. Modern process of economic growth deviated from stationary conception of equilibrium growth. Deviated from stationary conception of equilibrium growth. He defined growth pole as dynamic and highly integrated. He defined growth pole as dynamic and highly integrated set of industries organized around propulsive leading industry. ग्रोथ पोल क्या है? ये आपका ग्रोथ पोल है. ठीक है? Which is highly what? Integrated set of industries मतलब where you have major industries set up. ठीक है? सारी industries for example यहाँ पर है. Right? Why major industry setup is here? देखिए बड़ी इंडस्ट्री वहां पर होती है. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पहले क्या चाहिए होगा? फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ की इंडस्ट्री है. राइट? यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. बड़ा कोई ब्रांड ले लीजिए. यू टेक एनी ब्रांड, योर कैल्विन, योर रैल्फ लॉरेन. ठीक है? अगर वहां पे इनकी फैक्ट्रीज हैं या फिर कुछ भी है, और इससे पहले आपको क्या चाहिए? यू नीड अ मटेरियल आल्सो टू बी सप्लाइड टू देम. तो कॉटन तो है नहीं खुद ब खुद आपका मटेरियल में चेंज हो जाएगा. तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज फिर यहाँ पे सेटअप होगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम व्हाट? विद अ गुड मटेरियल. एंड उस मटेरियल से ये लोग क्या बनाएंगे? फिर दे विल ट्राई टू क्रिएट देयर own designer clothes, whatever, and they will sell it to the different parts of the world. So when you have the big industry set up there, so uske sath sath kya hoga? There will be other industry set up for their purposes, right? So growth pole is a dynamic and highly dynamic. क्यों बोला गया है इसको? Because it changes with time, है ना? It changes with time. And highly integrated set of industries around a propulsive leading industry. Propulsive leading industry यहाँ पे किसको मान लीजिए? The one which is center. कौन सी industry?
जो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे देयर इज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री with the name of in Faridabad. What is the name of that? The Shahi exports, right? This is one of the leading industries in India for the exports of the apparels, right? Shahi exports is one. Then there is Arvind in Bangalore, right? जब वहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, then you will try to do what? You will try to set up a small industry so that you can transport the goods to them, right? अभी तो this has become very very easy for the goods transportation, but what they will want? They will want to procure the materials from the nearby. अगर वो दूर से लेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं टिस्को प्लांट, आयरन एंड स्टील. राइट डाउन द एग्जांपल टिस्को प्लांट, iron and steel. Online students, if you have any doubt, keep on writing. I'm just watching out your comments. Okay, टिस्को प्लांट ब्रैकेट में लिखेंगे आयरन एंड स्टील, which leads to the establishment of good morning Sachin. Oh, good morning क्या लिखा है मैंने? Good evening Sachin. Okay, right. लिखेंगे टिस्को प्लांट, iron and steel, which leads to establishment of dynamic and integrated set of industries. Integrated set of industries. Right? Around it and it is linked to it. Around it and it is linked to it. Full stop. Then the whole region around the TISCO, which is your TISCO plant, TISCO, TISCO plant, iron and steel. And then the whole region around this TISCO will be known as growth pole, which will be known as growth pole. Yes, I'm repeating. Then the whole region around this TISCO, will be known as the growth pole, which will propel the growth of the whole region, which will propel the growth of whole region. ठीक है, डन. नेक्स्ट लिखेंगे the central idea of the growth pole theory is that economic development or growth is not uniform. Economic development or growth is not uniform. Economic development or growth is not uniform over an entire region, comma, but instead takes place around a Pacific pole. अब ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे सेम काइंड ऑफ आपका you will have the same kind of the proliferation of the economy, right? It is only in certain sectors that it will proliferate. ठीक है, बाकी सेंटर्स में इतना नहीं होगा. So this pole
around a specific pole. Full stop. This pole is often categorized by this pole is often categorized by core, ब्रैकेट में लिखेंगे की इंडस्ट्रीज. दिस पोल इज ऑफन कैटेगराइज्ड बाय कोर, ब्रैकेट में लिखेंगे की इंडस्ट्रीज, की ई वाई, की इंडस्ट्रीज, around which linked industries develop. Linked industries develop. ठीक है. This is about the growth pole. Now write down the critical evaluation also. जब भी आप कोई भी आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दे टॉक्ड अबाउट ग्रोथ पोल, एनी आंसर इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू हैव नॉट रिटन द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट. अगर मॉडल आपको पूछा है, सो मॉडल का आपको क्रिटिसिज्म यू हैव टू राइट. इफ यू आर नॉट राइटिंग द क्रिटिसिज्म, दैट मीन्स आप यू आर लूजिंग ऑन द मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मार्क्स में दिस हैज बीन आस्क्ड ग्रोथ पोल, जनरली 10 मार्क्स में ही पूछा जाएगा. सो ग्रोथ पोल पे आपको यू हैव टू गिव 5 marks allotted for the explanation, and then criticism पे आपको you will get around 2, right, and then conclusion 2, right, and then your 1 marks for example. So this is how it has been divided. Your marking scheme is also divided like that, right. सिर्फ ग्रोथ पोल को ही नहीं डिफाइन कर सकते, आप उसके बारे में भी बताना होगा कि क्यों सही नहीं है, व्हाट इज एवैल्यूएशन, वो सब कुछ आपको क्रिटिकल एवैल्यूएशन करना पड़ेगा. राइट डाउन द क्रिटिकल एवैल्यूएशन ऑफ इट. First point, growth pole was intended. First point, growth pole was intended for rapid economic growth. It was intended for rapid economic growth in a short span of time. It was intended for rapid economic growth in a short span of time. Full stop. But in the place of its origin, comma, it failed as but in the place of its origin, comma, it failed as reflected in the Paris and French desert. You have to put it in double inverted commas. Please put it in double inverted commas. Paris and French desert. This is a concept. What is this? See, they have been talking about कि अगर एक बड़ी इंडस्ट्री आप सेटअप करेंगे तो बाकी इंडस्ट्री भी सराउंडिंग पेरिफेरी में they will try to proliferate, right? But this was not proven in the case of Paris. When Paris developed a lot, what Paris is known for? Now it is known for also for the tourism, but apart from that, Paris was a very developed city. Huh? Industrialization, and also it was very popular back then also, right? But what about the other places surrounding it? They did not develop as Paris developed. So इसके साथ साथ तो इनको भी develop करना चाहिए था, right? But that model did not fit into this. That means ये universally correct नहीं है. अगर हर जगह same scenario होता, that means कुछ और भी factors हैं which are not allowing that. अगर growth center है भी वहाँ पे, हो सकता है surrounding area आपका उतना develop ना हो. So that means यहाँ पे क्या है? This is not applying. So when growth theory is not applying, this is one of the criticism. So you call this criticism in the example of, you call it in the example of Paris and French desert. Next लिखेंगे trickle down stage, the trickle down stage and decentralization. Second में लिखेंगे trickle down stage and decentralization. Trickle down stage and decentralization have not operated in the way
It was proposed in the model. They have not operated in a way. It was proposed in the model. मतलब मॉडल में आपको कुछ और ही बताया गया था कि आपका डिसेंट्रलाइज होगा, पीपल विल गेट द जॉब्स, इट विल ट्रिकल डाउन. दिस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट आपका जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल समथिंग इज बडिंग, यहाँ पे इट इज ग्रोइंग, दैट मीन्स इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर जस्ट बिलो टू यू, राइट? बट इट वाज नॉट हैपनिंग इन दैट वे. अगर हेल्प हो भी रही थी, पीपल हु वर बिलो यू इतना ज्यादा नहीं हो रहा था. सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था काफी जगह. सो ट्रिकल डाउन स्टेज एंड डिसेंट्रलाइजेशन हैव नॉट ऑपरेटेड इन द वे इट व्हिच वाज प्रपोज्ड इन द मॉडल. देन थर्ड पॉइंट लिखेंगे. ग्रोथ पोल वाज projected. Growth pole was projected as a alternative to the as the alternative to the central place theory. It was projected as alternative to the सेंट्रल प्लेस थ्योरी. सेंट्रल प्लेस थ्योरी का क्या था? ये ऑल्टरनेटिव था, राइट? नाउ यू विल टॉक अबाउट ग्रोथ सेंटर. क्विकली कम टू ग्रोथ सेंटर. राइट डाउन द हेडिंग ग्रोथ सेंटर्स. राइट डाउन American concept. American concept proposed by American concept proposed by Bodieville, Boude, Boude, Ville, Ville. Next point. He talked in terms of geographic space, geographical space. He talked in the terms of geographical space, which means the locations are governed by the locations which are governed by principle of accessibility, principle of accessibility, comma, nearness, 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 comma, location, comma, location, comma, resource base, or such geographical factors, such geographical factors, such geographical factors which themselves are responsible for, which themselves are responsible for propulsive growth, propulsive growth. एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स, द डेवलपमेंट ऑफ satellite towns along the major transport lines, along the major transport lines is a geographical space, is a geographical space, comma, where new industries, where new industries can be installed, where new industries can be installed as a part of urban decentralization, as a part of urban
Decentralization. See, growth pole और growth centers में basically क्या difference है? See, growth pole is talking about your economical space. For example, they talk about the thing that अगर आपने यहाँ पे कोई industry setup करा, right? This industry has been set up और यहाँ पे this is booming economically. So that means automatically it will attract lot of other people from the other areas and this will turn out to be a growth pole, right? But growth center mein they are talking about that it is not more from the perspective of economy, it is more from the perspective of geographical space. For example, if the coal deposits are found in the Jharkhand only, so the chances of putting the industry there is becoming high, right? So probability is high. And if I will place that there, automatically people will come to that area. So geographical space is more. This is a much important factor. सिर्फ यही नहीं है, economic factor नहीं है, geographic space factor भी है. For example, mines है आपका कहीं पे, तो definitely आप उसको क्या देंगे, importance देंगे. ठीक है, वहां पे ही है क्योंकि mines तो you will attract what, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर है so people will come here, यहाँ पे लेबर आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा, फिर यहाँ पे टाटा whatever it will set up या फिर जनरल स्टील्स whatever it will set up here only. So that is what they are talking and they have given the examples also. So I'll repeat the statement. Geographical space means the location which are governed by principle. पहला उन्होंने क्या बोला, एक्सेसिबिलिटी. अब इसी चीज को आप ऐसी झारखंड जगह या फिर छत्तीसगढ़ में डाल दीजिए जहाँ पे the accessibility is easily available. अब एक्सेस है ना आपको वहां पे माइंस वगैरह, these are easily available. So वहां पे they have set up accessibility and nearness. Are you getting the point? Then location, resource base है, correct? Such geographical factors which are themselves responsible. So यहाँ पे economic factor काम कर रहा है या फिर आपका geographical space काम कर रहा है? Geographical spaces are becoming more dominant because there is accessibility, there is nearness, so that is working more. So development of satellite towns along the major transport line is a geographical space where new industries can be installed as a part of urban decentralization, right? The location of iron and steel industry, लिखिए, example में लिखिए, the location of iron and steel industries. Write down the examples and you can also draw the map. See, wherever it is possible for you, draw the map. Try to show that where it is and try to mark it like that. Iron and steel. Then you can write which all mines or which all minerals can be found here. For example, coal, iron, you can mark it. Okay? Write down the location of iron and steel industry in Chota Nagpur. Iron and steel industry in Chota Nagpur is the occupation of geographic space, is the occupation of geographic space. Similarly, one example from the world, you can give it of Minas, Minas Gerais, Geras, Minas Gerais from Brazil, with rich deposits of iron ore and manganese ore, of iron ore and manganese ore, is also one of the prominent example. Write down next point. Growth center functions at lower hierarchy. Growth center functions at lower hierarchy, comma, below growth pole, comma, below growth pole.
नेक्स्ट लिखेंगे growth center is intended to utilize, write down, growth center is intended to utilize the local resources. They are intended to utilize local resources. They're intended to utilize local resources and develop local or and develop local or regional economy and develop local or regional economy. Full stop. It does not intend to draw. It does not intend to draw. It does not intend to draw resources from. It does not intend to draw resources from all the places right? Just go through it and let me know if you have any doubt. Okay, now we will write down about the comparison. Can we write about the comparison of the same? Right? Can we write about the comparison of Perox and Vaudeville um, models? Write down next. Comparison. So there can be a question on comparison also. So one point that you can emphasize of both of them, Perox. One thing that you can emphasize on this is a very critical point in this is that आपको ग्रोथ सेंटर ग्रोथ पोल पे तो बात करनी ही है राइट यू हैव टू डिफाइन ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स इसके अलावा क्या बात करनी है हाँ यू हैव टू टॉक अबाउट द अदर तो कैसे लिखना है आई ट्राई टेल यू हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर लिखिए राइट डाउन हाउ यू हैव टू राइट हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ राइट डाउन कंपैरिजन ऑफ Perox and write down comparison of Perox and vaudeville models. Vaudeville models. पहला पॉइंट लिखेंगे centrality of growth. First you will write down centrality of growth and then under it you will write both theorists agree that both theorists agree that growth originates from growth originates from
सेंट्रल पॉइंट, ये तो दोनों का ही सेम है, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्रोथ तो सेंट्रल पॉइंट से ही होगा, चाहे वो ग्रोथ सेंटर में हो चाहे वो ग्रोथ पोल में हो, राइट। उसके रीजंस डिफरेंट है, एक बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक स्पेस की, इकोनॉमी की वजह से लोग दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, एक बात कर रहा है ज्योग्राफिक स्पेस की, पर दोनों में क्या है अट्रैक्शन, तो दे आर कमिंग सेंटर पॉइंट पे ही आ रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन सेंट्रलिटी ऑफ ग्रोथ, then describe it. Both theorists agree that growth originates from, both theorists agree that growth originates from central point, growth originates from central point, whether in industries, whether in industries or in cities, whether in industries or in cities. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे impact on periphery, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे impact on periphery, पेरीफेरी पे क्या इम्पैक्ट है इसका, राइट डाउन impact on periphery. Each model emphasize the influence of, each model emphasize the influence of central areas on surrounding regions. Each model emphasize the impact of central areas on surrounding regions, comma, though Parox focuses on, though Parox focuses on industry driven growth, on industry driven growth, comma, while Baudible addresses urban hierarchy, urban hierarchy, addresses urban hierarchy. Acha, before that, Parox supports policies that develop specific industry, where Baudible models informs urban planning. That's it. That we will come to the conclusions. Please come to the conclusion. हाँ सिर्फ इतना, हाँ हाँ सिर्फ कंक्लूजन, हाँ सिर्फ इतना है, कंक्लूजन पे आएंगे, व्हाट कंक्लूजन यू हैव टू राइट, जैसे मैंने लिखवाया सिर्फ इतना भी आप सेम ऐसे ही एज इट इज कर लेंगे, वी विल राइट ग्रोथ पोल, ग्रोथ पेरोक्स, बॉडविल, इतना ही कर लेंगे, देन मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आता भी नहीं है और पूछते भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। कंक्लूजन में लिखेंगे थ्योरीज ऑफ फ्रैंकोइस पेरोक्स, theories of Francois Perroux and Jean Baudeville, theories of Francois Perroux and Jean Baudeville, yeah, Jean, the full name is Jane Baudeville, provide essential insights, provide essential insights into the nature of economic growth, into the nature of economic growth. Into the nature of economic growth. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पेरोक्स, मतलब पॉइंट मतलब यू हैव टू कंटिन्यू, पेरोक्स ग्रोथ पोल थ्योरी, पेरोक्स पोल ग्रोथ थ्योरी illustrates how concentrated industries, how concentrated industries drive growth, drive growth, but also create inequalities, but also create inequalities, while Baudeville's spatial structure, while Baudeville's spatial structure, you have to write like that.
इसका क्या मतलब है? व्हाई ही हैज गिवन दिस वर्ड स्पेशल? इस वर्ड से अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर ज्योग्राफिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली ज्योग्राफिक क्या है? इट इज यू स्पेस ओनली। तो आप इसको किस तरह से लिखते हैं? यू राइट लाइक दिस, स्पेशल, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल स्ट्रक्चर, तो आपको इस वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नया वर्ड क्या आ गया? सो यू राइट डाउन बॉडीबल स्पेशल स्ट्रक्चर मॉडल reveals it reveals the functional and hierarchical relationship. Hierarchical relationship, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उनका आंसर करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चंस, यू विल आंसर इट इन दिस क्लास ओनली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना आपको कितना समझ में आया इस मॉडल से, आपको इस असाइनमेंट से समझ में आएगा। इवन इफ यू राइट 5 लाइन्स इन इट, आई एम ओके विद इट, ठीक है। राइट डाउन व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ, क्विकली राइट डाउन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ Perrock's growth pole theory? What is the main idea of Perrock's growth pole theory? सेकंड लिखेंगे how does Bodybuild's spatial structure theory differ from Perrock's theory? It differs from Perrock's theory. Next question. Why are Perrock's and Bodybuild's theory important for human geography? They are important for human geography. Try to answer all this, and after 10 minutes we will do another theory, which is your central place theory. Okay, 7 to 8 minutes are enough to write. Okay, एटलीस्ट आप स्ट्रक्चरिंग तो कर ही सकते हैं सारे क्वेश्चंस की 7 to 8 मिनट्स में, राइट? अगर नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो। ओके,
How much have you been able to do? मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब you know ना what to write. ठीक है. Online students for you. Do ma'am, have you got my? No, Dhruv, I have not got an answer sheet. I have not got any mail as of now. Do you have my right mail ID ना? Ishan, are you able to write? हाँ, आप I'm trying, डायरेक्टली कर सकते हैं. Yes, Ishan. ma'am, I'm trying to write. Yes, very good. जब आपको नहीं आया समझ, ask me directly. Okay, so you can mail me here, Dhruv. Tomorrow is Saturday, so if I get the chance, I'll definitely try to give it by tomorrow only. ये डायग्राम आप एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर. वेरी गुड, वेरी गुड. डायग्राम जैसे मैंने बनवाया था वो भी ऐड कर सकते हैं. हेल्पफुल ऑलवेज. लिख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है. सो नाउ वी हैव टू मूव टू अनदर थ्योरी. जो आपके क्वेश्चंस बच गए, यू कैन गो बैक टू योर होम एंड राइट. इनफैक्ट तो मैं आई विल व्हाट आई सजेस्ट कि आप पूरा पूरा आंसर लिखें इसके ऊपर. ठीक है. सो इससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा. ठीक है. 3 क्वेश्चंस आई हैव गिवन एज एन असाइनमेंट ऑफ दिस थ्योरी. नाउ राइट डाउन सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टलर एंड क्रिस्टलर. तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या है? ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन थ्योरीज में. जैसे हमने पहले भी थ्योरी करी थी which was Weber's, right? पर फिर भी डिफरेंस आता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी और वेबर थ्योरी में. व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? सो फर्स्ट आप समझेंगे कि व्हाट सेंट्रल प्लेस थ्योरी टॉक्स अबाउट एंड देन वी विल डिस्कस. सो सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अ स्पेशल थ्योरी इन अर्बन ज्योग्राफी that attempts to explain the rationale behind distribution pattern, size and number of cities and towns around the world. ये पैटर्न डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं. ऐसा ही शायद पैटर्न किसने बताया था आपका? सेम पैटर्न किसने बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. वेबर ने भी कुछ ऐसा ही बताया था. We have done in our previous classes, right? So it also attempts to provide a framework by which these areas can be studied for historic reasons. So they have tried to give you some kind of structure, why the size of the population in this area is like this, why the distribution is like this, and why the size of why this is how the people, for example, which category they are belonging to, right? So they are trying to give some kind of structure in this. It is important to understand कि structuring क्यों की गई, what was the purpose, criticism क्या था, क्यों structuring did not help in many cases. So we will do all of this. First you write down the introduction. Central place theory. Central place theory. Again I'm using a keyword which is, you call it as spatial theory. That means ये भी किस बारे में बात कर रहे हैं?
We are also talking about geographic space, ठीक है, और सेम बात किसने करी थी, बॉडीवेल ने भी करी थी, ज्योग्राफी स्पेशल स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने, ठीक है. सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अ स्पेशल थ्योरी इन अर्बन ज्योग्राफी, in urban geography that attempts to explain that attempts to explain the rationale behind distribution. You can check here: distribution size pattern, distribution size pattern, and number of cities and towns. Number of cities and towns. Rational weights, ये जो लिखे हैं point, size distribution pattern, size distribution pattern, and number of cities and towns. Number of cities and towns around the world. Around the world. It also provides a framework. It also provides a framework by which these areas can be studied, by which these areas can be studied for historic reasons. For historic reasons. Next point. He also tried to explain how despite having the same population number, how despite having the same population number, comma, one town can surpass another, one town can surpass another in functional importance, in functional importance. In this regard, central place theory. Now you will write the full name of both. Central place theory by Walter Kisteler. Write down the spelling of Walter. Walther, Walter, and then you will write Kisteler. जो पहले आपको लिखवाया था Kisteler scene. Walter Kisteler. एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन, मतलब यही थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करके किसने लेकर आया, कौन लेकर आया, ऑगस्ट लॉस्ट, राइट. एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन गिवन बाय ऑगस्ट लॉश. Full stop. These theories suggest that there is a relationship between functions of settlement and its special location. Functions of settlement and its special location in distribution pattern. देखिए, ऐसा हो सकता है, if I take a case A and B, both the places are having same size, same set of population, दोनों का जो demography है वो भी it is same of both towns और city, pattern भी same है, सब कुछ same है, right? But still this town is developed far more better, in a better way than the B, right? So it can happen in this way, that why this town having such a same kind of a attributes as B is still having so much of functionality versus B, right? So he tried to explain.
So little bit we'll write about the Christaller also. Walter Christaller, comma, he was a German geographer. Walter Christaller, comma, a German geographer, proposed his theory of proposed his theory of central places. Proposed his theory of central places in his book. Central places in his book. In a double inverted commas, write down central place in southern Germany. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेंट्रल प्लेसेस इन southern Germany. Central place in southern Germany. In southern Germany. Center place, please. In 1993, in 1933. In 1933. So ये कुछ भी प्रोड्यूस करने से पहले, कोई भी थ्योरी प्रोड्यूस करने से पहले व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने कुछ अजम्पशंस रखे. क्या क्या अजम्पशंस रखे थे? तो पहला अजम्पशन इन्होंने ये रखा दैट द प्लेन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. इसको बोला इन्होंने आइसोट्रोपिक. इसका क्या मतलब है? दैट सारा जितना भी टेरेन है किसी भी एरिया का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली सेम प्लेन पे है. ठीक है, सो ज्योग्राफिकली वी डोंट हैव एनी इशू, कोई बैरियर नहीं है. दूसरा उन्होंने बोला कि परचेजिंग पावर सबकी सेम है. ये अजम्पशन उन्होंने रखी बिफोर प्रोड्यूसिंग दिस मॉडल कि परचेजिंग पावर भी सबकी सेम है. ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा खरीद सकता है, कम खरीद सकता है. मेरी जो मॉडल है उसमें परचेजिंग पावर सबका सेम होगा. दूसरा उन्होंने बोला that there is a single means of transport and transport cost rises proportionately. मतलब सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक यू हैव अ रेलवेज, सो एवरीवेयर यू हैव अ रेलवेज इन दिस मॉडल. मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बोला कि जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें पहले से होंगी, तब जाके मेरा जो मॉडल है वो बिल्कुल सही बैठेगा. ठीक है. सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि अगर कम्युनिकेशन में अगर रेलवे है आपके पास या वॉट एवर इट इज देयर, सो वहां पे सब जगह एक्सेस है आपके ट्रांसपोर्ट का इजीली, और जो चार्जेस है मेरे ट्रांसपोर्टेशन के वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे. मतलब विद द डिस्टेंस वट एवर चार्ज इट इज इट विल बी चार्ज लाइक दैट. देन ही टॉक्ड अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स. और पॉपुलेशन कैसे रहेगी? इवनली डिस्ट्रीब्यूट. ऐसा नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर हियर वर्सेस हियर. सो कॉन्सेंट्रेशन जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे उतना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ सेम है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन भी सेम है. तो उन्हें अपनी क्या रख दी, प्रीरिक्विजिट्स रख दी कि ये मेरे assumptions हैं, उसके बाद मेरी थ्योरी बिल्कुल सही, इट विल फिट इनटू ऑल द मॉडल्स. सो कुछ मॉडल्स उन्होंने बोले. सो वी शुड राइट द assumption. एक क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट वाज व्हाई द assumptions were like that of Christaller model. Write down assumptions of the model. Short में लिखेंगे इसको. Assumption of the model. First point. There are isotropic plane. आइसोट्रॉपिक प्लेन को टफ समझने की जरूरत नहीं. जस्ट मीन्स कि आपका रिलीफ फीचर कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दैट आइसोट्रॉपिक ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लैट सरफेस on which natural resources are evenly distributed. On which natural resources are evenly distributed. Second point लिखेंगे population is also evenly distributed on plane. Population is also evenly distributed on plane. Third point, write down the third point. All consumers have similar purchasing power. All consumers have similar
परचेजिंग पावर, उन्होंने ये भी बोल दिया कि किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, परफेक्ट कंपटीशन है। इकोनॉमी में पढ़ा है आपने, अभी पढ़ेंगे कुछ लोगों ने, अभी ये हैव नॉट कंप्लीटेड देयर जीएस कोर्सेज। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट नहीं है किसी के पास, ठीक है। हाँ, इवन। सो राइट डाउन देयर इज नो, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एक्सेस प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। Write down. According to him, according to him, हाँ, according to him, the centrality of the place is referred to as, according to him, the centrality of the place is referred to as, the centrality of the place is referred to as a town, a town which serves its surrounding areas, a town which serves its surrounding areas and can only be measured, and can only be measured in terms of goods and services it offers, and can only be measured in terms of goods and services it offers. Full stop. There are different orders of goods and services. अब उन्होंने बोला that सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सो सेंट्रल आपने लगा दिया तो दैट मीन्स सेंट्रलिटी का मतलब क्या बोल रहे हैं वो, दैट यहाँ से आपको सारे जो गुड्स है वो आपको मिलेंगे। सो गुड्स अब हर टाइप के हो सकते हैं। गुड्स कैन बी योर लग्जरियस commodities also, your luxurious possessions also, for example your cars, right, and your day to day बेसिक नीड्स ऑल्सो, बेसिक amenities में जो आते हैं आपका, फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये भी हो सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप गुड्स कौन से, किस किस वजह से उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ, देयर आर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट डाउन, there are different orders of goods and services, comma, for some are costly, for some are costly and rarely purchased, for some are costly and rarely purchased. For example, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कार, ज्वेलरी एक्सेट्रा, कार, ज्वेलरी, and will need large population, and will need large population to sustain them. ब्रैकेट में लिखेंगे others are very, others are every day need items, others are every day need items and require small population for its survival. अब जितना ज्यादा वेराइटी आप प्रोवाइड करेंगे किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल एक टाउन है वहां पे हर तरह की चीज मिल रही है, उसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी या जहाँ पे कम वेराइटी की चीज मिल रही है।
जहाँ पे ज्यादा मिल रही है तो वो फंक्शनल इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज्यादा. सो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो अ प्लेस हु इज हैविंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स हैज अ मोर फंक्शनल इंपॉर्टेंस वर्सेज अ प्लेस विच वाज नॉट हैविंग मोर. ठीक है. सो राइट डाउन द वैरायटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इट प्रोवाइड्स. गुड्स के साथ सर्विसेज भी ऐड कर लीजिए. गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स for its population, underline its functional importance. Underline its functional importance. ठीक है. So this is all about how he talked about it. Next, you will also tell why there has been disapproval. See, if you really want to get into the depth of this theory, तो बहुत ज़्यादा इसमें है, market principle है, other things also there, but I don't think there is a need for that. Because this much is all what is required for the theory to understand कि what he is trying to. You have to just take the assumption कि उन्होंने क्या बोला और ये बताना है आपके central place theory क्या है, and then you have to tell कि क्यों ये criticize हुआ, right? क्या क्या इसके lacunas थे, क्या क्या gaps थे, you will understand that. Otherwise इसमें और भी चीजें हैं which we call it as administrative principle. Actually you can write this point, we can go for this, but हमको detail में नहीं करेंगे. Write down. Or do one thing first, आप criticism लिख लीजिए, that would be better. Write down criticism. लिखिए पहले criticism. The central place theory is majorly criticized. First point. The central place theory is majorly criticized for its oversimplification of the real world, of the real world, by making number of assumptions. Weren't you thinking that it is very fishy that so much of assumption that he has already taken? बहुत अजीब बात है ना. If you are not realist, आप रियलिस्टिक चीजों पे बात ही नहीं कर रहे हो तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर मॉडल. आप एक assumption ले सकते हो, दो assumption ले सकते हो, दैट इज फाइन, बट यू आर टेकिंग n नंबर ऑफ assumption, सारे तो आपने हटा दिया. हाँ, इसलिए ये बहुत बड़ा इनका ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है. The central place theory, first point, is majorly criticized for its oversimplification of real world by making a number of assumption. Second, large area of flat land are rare. He talked about what land? Isotropic. ठीक है. Second, large area of flat land are rare. Flat land are rare. Do you agree, all of you? Third point, the positioning of settlement. The positioning of settlement is generally random and not evenly spaced. The positioning of settlement is generally random and not evenly spaced. Contrary to even spacing, even spacing suggested by Christeller. Even spacing suggested by Christeller. Next point लिखेंगे. The concept of perfect competition. The concept of perfect competition is also untrue. मतलब सबके पास कोई excess profit ही नहीं होगा. That is also not going to happen. The concept of perfect competition is also untrue.
नेक्स्ट लिखेंगे consumer travel behavior. Consumer travel behavior cannot be projected. Cannot be projected. Next, technological change. Technological change can also brought about changes. Technological change can also brought about changes in the ways provision of goods and services are organized, in the way goods and services are organized and located. For example, your supermarket small culture, there are change how you do. See, if you're doing the online shopping, for example, talk about it. आप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रोलिफरेटिंग. अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा सीमलेस हो गए हैं that do you really think that अब डिपेंड होगा कि how many people are actually coming there or not? पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? बिकॉज नाउ पीपल आर जहां पे है वहीं पर ही शॉपिंग कर रहे हैं और वहीं पर ही रह रहे हैं. सो दैट मीन्स पीपल का मूवमेंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेयर दे आर स्टेइंग they are buying there only, right? घर पे बैठे बैठे they are just ordering up from wherever they want to. So when they are doing such kind of activities, what do you understand by this? What do you understand by this? So हाँ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस से they are trying to shift in the model, trying to bring the shift in the model. अब मॉडल किस बारे में बात कर रहे हैं? एक सेंट्रल एक प्लेस है, वहां पे आपका पीपल आर डिपेंडेंट और उनका परचेजिंग पावर भी सेम है, दे आर कमिंग देयर. व्हाट इफ द पीपल आर नॉट एट ऑल कमिंग देयर? व्हाट विल हैपन देन? तो हमने तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना. ई कॉमर्स में क्या है, दे आर डिफरेंट वेयर हाउसेस विच यू हैव, और वहां से आप फिर प्रोक्योर करते हो, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स वहां से लेते हैं. ऐसा थोड़ा ना आपका अमेजोन है तो डायरेक्टली अमेरिका से आपका शिपमेंट होके आ रहा है. आपका जो भी है, आपका जो शिपमेंट है या फिर जो रिटेलर्स है व्हाटएवर, या इंडिया के जो रिटेलर्स हैं, दे हैव डिफरेंट वेयर हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. तो वहां से यू दे सेंड द डिलीवरी एजेंट और फिर आपका ऑर्डर आता है, प्लेस होता है. ठीक है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. हाँ, मतलब कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड, मतलब कंज्यूमर के ट्रैवल वेदर दे विल कम और नॉट, यू नेवर नो, और मे बी दे फाइंड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है उनका डिमांड खत्म हो गया हो. ये भी हो सकता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया हो, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल गया हो. ठीक है, उन्होंने हर चीज पे बोल दिया कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. सो अच्छा, इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है सेंट्रल प्लेस थ्योरी का? कहीं तो फिर एप्लीकेबल होगा ये. इसका एप्लीकेशन लिख लीजिए, राइट डाउन द एप्लीकेशन, applicability and use. First point, it provides rational for it provides rational for selective location. It provides rational for selective location and efficient space and functions. Efficient space and function. Second point, in terms of functional and behavioral dimensions. In terms of functional and behavioral dimensions, it has drawn attention to inter-town interdependence. INTER, inter-town interdependence. Yes, Dhruv, you can directly share it to me. Definitely, I've shared the mail ID to you. Okay. हाँ, बताइए. इंटर टाउन इंटरडिपेंडेंस. ठीक है.
Okay, quickly we will move August Losh, right? And he has modified this theory. बहुत कम इन्होंने यहाँ पे modification किया. उनको क्या इनका जो मॉडल था उसमें क्या लेकुनास देखे, we will see that. ठीक है, बाकी सब सेम है. ज्यादा आपको इस पे ज्यादा you don't have to put lot of effort, क्योंकि आपको अगर एक थ्योरी समझ आ गया then you can also do its modification, right? Write down first. In 1940, famous economist in 1940s, famous economist August Losh published book titled Economies of Location. Economies of Location, in which he established a general theory of location. In which he established a general theory of location. उनके हिसाब से क्या था कि सिर्फ एक ही चीज आपको बूस्ट नहीं करती है टू कम टू द प्लेस. बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेस है, बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर होती है. ये सेम चीज किसने बोली थी? वेबर के केस में आपने हैव यू सीन दैट? वेबर का जब हम वो करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे ही हमने बात करा था इस बारे में. आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू राइट हियर, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट गो एंड रिवाइज सो दैट यू कैन फाइंड कि क्या क्या इसमें सिमिलैरिटी थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे. ठीक है, सो लॉच ने क्या बोला कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पीपल. देयर कैन बी अदर फैक्टर्स आल्सो लाइक मार्केटिंग, like communication, administration of the place. So write down. Losh sought to draw attention. Losch. Losh sought to draw attention to the marketing factor. Losh sought to draw attention to the marketing factor and idea of and idea of maximum profits. An idea of maximum profits. Full stop. He claimed that it's not a single economic pull. He claimed that it's not a single economic pull that influences most settlement that influences most settlement that influences most settlement. Rather, a complex combination of rather a complex combination of market comma a complex combination of market comma communication or administration full stop. He attempted to explain the size and shape of the he attempted to explain the size and shape of the market area within which a location would command the largest revenue. ठीक है, सो इन्होंने भी assumptions रखे जस्ट लाइक अ क्रिस्टेलर, पर इन्होंने सिर्फ एक ही थॉट पे बात नहीं करी कि सेंट्रलिटी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो रहा है, फुल फैक्टर है वहां पे, बट लेकिन और भी चीजें, आप मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, आप वहां के
एक हाँ कैसा आपका कम्युनिकेशन है वो भी आप बात करेंगे. सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. So Losh attempted, write down, Losh attempted to find a spatial structure, SPATIAL, that would be competent for both. That would be competent for both the producers and consumers. Okay. All right. So I'm reading out something. So just let me. आपको सब कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है? So I'm talking about his assumption also, same assumptions हैं, so इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है? But I am reading out. Isotropic surface हम बात कर चुके हैं. Constant supply of goods and services हमने बात कर ली है इस बारे में. Population evenly distributed, yes. Demand decreases with increase in prices, yes. Right? We have discussed about all of that, isn't? राइट नाउ ऑगस्ट लॉच क्या कौन थे जैसे आपके क्रिस्टलर थे जर्मन ही वाज आल्सो जर्मन known for his contribution to regional science and urban economics, right? Similarly he was also contributing this only. Now Lost attempted to find a special structure that would be competent for both producers and consumer. To identify it, he chose one production center from the set of production points established on the plane, and he then arranged in such a fashion so that this center was common for all, and he then rotated it around the central point and brought them to the rest where the maximum number of production centers are there. Means थोड़ा सा tough language में जब आप theory पढ़ते हैं, it has been given like that, but you don't have to do it in this manner. आपको सिर्फ ये समझना है कि उनका how it was different. सिर्फ different जो मैंने आपको 3 factors बताए हैं सिर्फ वही लिखना है. उन्होंने कैसे rotate किया, क्या था, you don't have to get into so much of detail. ठीक है? हाँ, लेकिन जब कंपैरिजन करने की बात आएगी लॉस और क्रिस्टलर के बीच में, तब आप लिख सकते हैं बिकॉज देयर कैन बी अ क्वेश्चन. अब लिखिए लॉस्ट unlike crystallar, comma, allows for this fact and adapts into the structure. What I've just made you write. I'll explain what does it mean. ठीक है? Okay. Write down. Since his theory is also abstract in nature, since his theory is also abstract in nature, abstract means बहुत ही idea based है, ठीक है? Since his theory is also abstract in nature, he overstressed on demand. Therefore, his theory was also disapproved. Loss theory, please I'm repeating, loss theory was abstract in nature, and since his theory was also, he stressed on demand. What I've said, just repeat the line. Since his theory abstract in nature, again, he stressed on demands, लिखिए, and he stressed on demands. Therefore, his theory was also disapproved.
Next point, lost notion of market demand. Lost notion of market demand was too simple. Full stop. In reality, in reality, an entrepreneur will have to deal with several issues. In reality, an entrepreneur will have to deal with several issues before he estimates demand as a basis of their locational decision. हाँ. What I've written, Tanish? You have also not written? Hmm. Locational decisions. अब 2 पॉइंट्स लिखेंगे सिर्फ कंपैरिजन में. लिखिए, राइट डाउन द हेडिंग कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टेलर एंड लॉश, because you never know if this question comes, how will you manage it? ठीक है, write down. First point, Christaller theory attempts to realize retail business and services better, whereby Lossian model, Lossian, Lossian model sought to explain the spatial distribution of market based on manufacturing. Next point, Christaller began his hierarchy from higher centers. Christaller began his hierarchy from higher centers like metropolis. Metropolis हमने पढ़ा था. What are these? Cities, mega cities kind. ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें. Yes, population define है इसमें, right? While lost did the reverse, while lost did the reverse by beginning at the lowest level of hierarchy. By beginning at the lowest level of hierarchy. Next point, Christaller did not take into account the presence of specialized production centers but it was not overlooked by लॉश. मतलब लॉश ने एम्फेसाइज किया था अबाउट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर्स. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टेलर पैटर्न
is best suited. Crystallar pattern is best suited for those cities which develop in sparse settlement regions, but that of Losh is for densely populated regions. Right? So we have done the comparison, we have done how they are different. ठीक है, अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें कि ऐसा क्यों। मैंने मॉडल्स में जैसे आपको बताया कि जितना मैंने आपको कराया है आपको उसी तरीके से करना है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे देन यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज ये मॉडल्स ऐसे थे कि दे वर ऑफ नॉट दिस अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस थे, दे वर लाइक बिग बिग पीडीएफ्स। नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, इसके लिए आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ के ऊपर पूरी बुक थी 200 पेजेस की, बट आई टोल्ड यू कि यू डोंट हैव टू रीड ऑल दैट, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा उस पर इतना ही समझना है आपको। सो सिर्फ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज ओनली इनफ। ठीक है, अब आप कंक्लूजन लिखेंगे। आई टेक एक्स्ट्रा टाइम today, only conclusion I'll make you write. Okay, your time is up, but I'll make you write this conclusion. Write down both Christeller and Losh model, both Christellers and Losh model agree that the triangular arrangement of production site or Losh special structure given on the basis of marketing, administration and communication of the place are still applicable in many centers or regions of the world. Right? And you can write the examples like I have given it to you. Okay. Now your models has been completed. Everything has been completed in that sense. From Monday, we are going to start with the Indian geography, which is your part 2. Okay, your paper 2. All right. So we'll complete that. In that, we'll do a lot of examples, etc. I'll also share the syllabus with you. Probably by Tuesday, I'll share the printed papers, printouts of that. And for the online students, you will get it on your portal. All right. Thank you so much, class.